So when supply increases, supply of your money increases and demand is not there, so obviously your जो value है रुपये की वो depreciate हो जाएगी. तो अब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है. सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है और वो क्या करता है, वी हैव ऑलरेडी रेड, वो फॉरेन करेंसी को सेल करता है. व्हेन इट इज सेलिंग इट इज गेटिंग मनी एंड देन ऑब्वियसली आपकी जो LM कर्व है इट शिफ्ट्स बैक टू LM0. तो देखो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट का दिखा रहा है, वेयर योर डिमांड इज हियर, सप्लाई वाज हियर, बट जब 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 फॉल आया तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया. People are not investing, the supply of US dollar shifted here and यहाँ पे आपके एक नया इंटरेस्ट रेट, एक नया आप एक लेवल देख रहे हो. So this is what is happening in the, ये ऐसे ही काम करता है आपका इकोनॉमी. And then your central bank intervenes and brings everything back to normal. So contraction in money supply under fixed rate of system. Conversely, if the central bank adopts the policy of contraction in money supply, LM curve will shift to the left. तो यहाँ पे आपने देखा ना कि यहाँ राइट हैंड शिफ्ट किया है, तो जब कंट्रैक्शन होगा तो LM कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो देखो अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि हम सरप्लस में चले जाएंगे. नीचे आता है तो डेफिसिट में होता है और जब ऊपर जाता है तो सरप्लस में होता है. दैट इज योर एक्सपोर्ट इज मोर देन योर इंपोर्ट. एंड इंटरेस्ट रेट हाई है तो ऑब्वियसली आप सरप्लस में ही जाओगे, बिकॉज देन जो फॉरेन करेंसी की इन्वेस्टमेंट है आपके कंट्री में काफी ज्यादा आएगा. Conversely, the central bank adopts the policy of contraction in the money supply. LM curve will shift to the left of the initial equilibrium point E. Given the IS curve and the new equilibrium will be reached at a higher domestic rate of interest as compared to foreign interest rate. This will induce massive capital inflows, which will decrease the demand for domestic currency, and as a result, domestic currency will appreciate. Nothing very difficult to understand. हमने ये सब पढ़ लिया है, मैंने आपको समझा दिया है. रीड करोगे आराम समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे बोला गया है. To maintain the exchange rate, the central bank will buy foreign currency. ये हमने अभी just now explain. maintain करने के लिए क्या करता है, central bank buy करता है foreign currency को and give domestic exchange, give the domestic currency in exchange. As a result, central bank will be forced to expand the money supply, and this monetary expansion will cause shift in LM curve to the right, so that ultimately the domestic economy is back to the equilibrium point. जिस तरह से जब सरप्लस और जब डेफिसिट होता है सेंट्रल बैंक सेल करता है, उसी तरह से जब सरप्लस होता है तो सेंट्रल बैंक बाय करता है फॉरेन करेंसी को, क्योंकि सरप्लस में वी हैव टू इंक्रीज आवर मनी सप्लाई. जब हमारा सप्लाई जब हमारा वैल्यू अप्रिशिएट हो जाता है. तो ये आपको समझना, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी इसकी कि क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है. और एंड ट्रस्ट मी, यही सेम चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. एंड इवन अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम थिंग्स कि कैसे appreciate हो रहा है currency and how we are bringing the value of the currency back to normal. कैसे currency appreciate हो रहा है उसको हम लोग कैसे back to normal लाते हैं. and जहाँ पे हम लोग fixed exchange rate की बात कर रहे हैं तो we are obviously trying to maintain the exchange rate by how are we trying that, by letting the central bank intervene. and वही जब आप बात करोगे floating exchange rate की तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. We let the money to float, that is आराम से अपनी जो रेट है it can stay wherever it wants. So conclusion, from the foregoing analysis of Mundell Fleming Model under the fixed exchange rate regime, it follows that when capital mobility is perfect, interest rate in the home country cannot deviate from those prevailing abroad. It is quite evident from the above that the perfect mobility of capital under fixed exchange rate regime monetary policy in a small open economy is quite ineffective. So the monetary policy, तो आपने देखा कि जो monetary policy है in small open economy is quite ineffective to influence the level of national income and employment.
So any attempt by the central bank ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को ये अफेक्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि किसी भी कोई भी कंट्री अंडर फिक्स्ड इंटरेस्ट रिजीम, सॉरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कोई भी कंट्री अपना मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकती है, उसे वर्ल्ड मार्केट को ध्यान में रखना होगा एंड उसको उस हिसाब से काम करना होगा। इसीलिए जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी है वो ये दोनों चीज फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करती है, इट इज क्वाइट इनइफेक्टिव। Any attempt by the central bank of the country to reduce interest rate by expansion in money supply would lead to massive outflow of capital, tending to cause depreciation in the home currency. तो इसीलिए ऐसा अगर होता है तो या तो फिर डेप्रिसिएशन होगा या फिर अप्रिसिएशन होगा, एंड आफ्टर दैट अगेन एवरीथिंग विल फिर वही होगा, इंक्रीज डिमांड सप्लाई एंड देन बैक टू नॉर्मल। Central bank, which is under obligation to maintain exchange rate at a fixed level, would buy domestic currency in exchange for foreign currency. This will result in reduction in money supply of the goods original level. तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, so you read it. Exam में while writing answer it will help you. And this I am also I am providing you as notes. तो आप क्या करोगे, आप pause करोगे, आप screenshot ले सकते हो, नहीं तो आप pause करके इसको read कर सकते हो, and you know write it in point wise, first point, second point, थोड़ा दिमाग लगाना है और उसको वैसे ही आंसर पे लिखना है। ऐसे आंसर मत लिख देना, ऐसे टाइप आंसर नहीं लिखना चाहिए। एंड मेक योर आंसर क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेक ग्राफ्स, बिकॉज यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो आपको दिखाना होगा, आईएसएलएम कर्व दिखाओ, बीपी लाइन दिखाओ, ये आंसर इसी पे डिपेंड करेगा। तो एंड दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑन आईएसएलएम मॉडल। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द एंड, अभी इसके बाद भी वी विल स्टडी फ्लोटिंग भी पढ़ना है, फिक्स और भी कुछ पढ़ना है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। थैंक यू।